any paper whenever I teach in the campus, but I have to be factually correct. So let's come to the point. When we talk about child protection, child abuse, and especially sexual abuse of small children, as per POCSO Act, Prevention of Sexual Harassment, Prevention of Children from Sexual Offences Act, it considers 0 to 18 age as a child. ठीक है, पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है कि चाइल्ड के अंदर आता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अब्यूज, जनरली व्हाट वी थिंक कि एक तरफ हम कहते हैं जैसा गांधी जी ने कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो और दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि जो बाल मन होता है, जो बच्चे का दिमाग होता है, वो इतना कोमल होता है, इतना नरम होता है कि उस पर जो भी छाप पड़ती है अच्छी या बुरी, वो पूरी लाइफ आपके साथ रहती है। And if you realize, if you think about yourself, I am confident, I am sure the kind of treatment you got during your childhood is still with you. It might be something very good, or if it was horrible, then I'm sure it can keep you haunting as long as you don't get proper and proper psychiatrist access or psychologist access. तो इन सारी बातों की वजह से हमने बात करना शुरू किया। हमारे देश में ग्लोबल कन्वेंशंस हैं, बहुत सारी ट्रीटीज हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज को एक इशू बनाकर फ्रंट पर लाने की बात की गई, क्योंकि जनरली एक सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें माना जाता है कि एक तरफ बच्चे को भगवान का रूप भी मानते हैं, दूसरी तरफ हमें लगता है कि when we talk about something like sexual abuse or any kind of abuse, then mostly we think of adult people or grown up. But actually this is not the case. And abuse is not something that is only physical. It's mental also, it's social also, many dimensions जो कि आप पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट, दो तीन एक्ट्स हैं जो आप सबको पढ़ लेना चाहिए। एक मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। Then this POCSO Act is very important because all of us have family or neighborhood and relatives. So definitely these information are going to help us and others as well. So there are few provisions that I would like to highlight here for your information. Very important aspect of this act is that this is gender neutral, because when we talk about the child, yesterday somebody said that all the legislations are for women only. This is not the case. Wherever it is required, things are being made gender neutral. So this POCSO Act is gender neutral. First information is that 0 to 18 years age people considered as gender under this act. Secondly, this is gender neutral act, and under this act there is provision to create National Commission for the Protection of Child Rights and also State Commission for the Protection of Child Rights. And these two bodies are statutory bodies. This is very important part. This act also makes a provision for special court so that speedy justice can be provided to those who are suffering and who have been subjected to this kind of exploitation or abuse by the people, because sometimes child trafficking is an issue, or children are captured for begging or for organ trafficking, human trafficking. Overall, there are two prominent victims of human trafficking, that are women and children. And children are soft target. They are soft target. Why? Because it's very, so sometimes chocolate is enough, और इसका अब्यूज होता है, मिसयूज होता है। एंड इफ यू गो थ्रू द डेटा ऑफ NCR Court Bureau, you'll find that most of the abusers are known to the victims. ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि हमें जानना होगा कि जनरली जाने हुए लोग होते हैं और उन जाने हुए लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। And one another important aspect that needs to be discussed here is that idea of sexual assault in case of POCSO Act has been defined in a very wider manner, and
sexual assault deemed to be aggravated when it is conducted by or done by someone who is holding a very important position. For instance, if the child sexual abuser is your teacher, your doctor, lawyer, a person holding a very responsible position, then the notion, the idea under sexual abuse under this act, POCSO Act 2012, is aggravated. And moreover, as Dr. Mustafa rightly pointed out, he talked about different kind of disabilities and mental disability was also discussed by him. So whenever a person is suffering from any kind of mental illness, then again the abuser's sexual assault is considered to be aggravated. So in this case, this act takes the cognizance of this kind of situations that needs to be understood by all of us. Another important aspect is that when under section 42A of POCSO Act, whenever there is an inconsistency between POCSO Act and other acts existing in India, then tell me which act is going to prevail? कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? अगर दोनों में विसंगतियां हो रही हैं तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? गेस करके बताइए. पॉक्सो प्रिवेल करेगा, क्योंकि इसी एक्ट के तहत आपने ये जानने की कोशिश की है कि चाइल्ड अब्यूज को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है आईपीसी 375, एक्चुअली इट डज नॉट प्रोटेक्ट मेल विक्टिम्स. ठीक है, जबकि आपका पॉक्सो 2012 है किसको प्रोटेक्ट करता है? मेल एंड फीमेल दोनों, बिकॉज फॉर देम sexual abuse, sexual assault is something that talks about penetration, vaginal penetration, and in case of male this is missing. But in this case, in this act, under POCSO Act, the definition of sexual assault has been broadened and it covers male and female equally, because now the definition of sexual assault has been also broadened by the lawmakers of this land. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो हमारा आईपीसी 377 है, सेक्शन 377, वो अननेचुरल ऑफेंसेस को डिफाइन नहीं करता था. ठीक है, देयर आर अननेचुरल ऑफेंसेस इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन. उन अननेचुरल ऑफेंसेस को डिफाइन करने का काम किसमें किया गया है? पॉक्सो एक्ट में किया गया है. दिस एक्ट available in both the languages, Hindi and English. So I request all of you kindly go through this act, have some idea, क्योंकि ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मेरा विषय ना होने के बावजूद भी मैंने जब साहू सर ने मुझसे कहा, डॉक्टर पूजा ने कहा, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत बात कर लेनी चाहिए. और मैं कुछ पढ़ लिख के नहीं आई हूँ उसके बारे में, बस मैं कोशिश एक की हूँ. So there are 12 principles under POCSO Act 2012 that has been identified for everyone, even if an individual or person holding very important position or organization or whoever is going to deal with a kid or children, उनको 12 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है. और वो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला प्रिंसिपल है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल. सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ चाइल्ड, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि उसके साथ अगर कुछ हुआ है, उसके साथ कोई असॉल्ट हुआ है, तो उसके राइट टू लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसके सर्वाइवल को कैसे इंश्योर करना है. द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट चाइल्ड शुड बी गिवन बेस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन. जैसे हम डांट के चुप कराने वाला एटीट्यूड है ना, दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. हमें कैसे बात करनी है? बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे से, सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स. ठीक है. थर्ड है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी प्रकार का भेदभाव है, बिकॉज अगेन चाइल्ड मेल एंड फीमेल, एंड इफ यू गो थ्रू द डेटा अवेलेबल, देन यू फाइंड दैट फीमेल चिल्ड्रन आर more prone to sexual abuse as compared to male. But again, we cannot deny the fact that male children, childs are also getting sexually abused. तो इसीलिए इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की गई है. Then it also talked about right to privacy.
Right to privacy, although we got this right from Supreme Court of India by enlarging Article 21, but in case of children, this is very important. Why? Because their entire life is there in front of them. तो आपने अगर कोई स्टिग्मा अटैच कर दिया किसी बच्चे के साथ तो क्या होने वाला है, पूरी पूरी जिंदगी उसको स्टिग्मा के साथ जीना पड़ेगा. इसीलिए privacy is very important. Then right to information is there. And we all know right to express views, right to be compassionate. आपको जब भी आप किसी बच्चे से डील कर रहे हैं, you have to have compassion. वो बहुत जरूरी है, उसको एडल्ट की तरह डील करने की जरूरत नहीं है. या होता है ना कि हम सोचते हैं, आपको याद हो, there was a report by लिंगदो कमेटी on this ragging. तो लिंगदो ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करा था कि क्यों हम जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में रैगिंग वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. बेसिकली लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने का तरीका था, बट इट बिकेम वायलेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो जो एक आइडेंटिफाई किया था उन्होंने, उसमें बताया कि हमारा जो फैमिली है उसमें हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया, एड्रेस करने का टाइम ही आपने क्या किया, पीट करके चुप करा दिया. ठीक है, तो जब आपने उसको वायलेंट तरीके से साइलेंट किया, so that moment you may forget, but for that child, I told in the beginning कि उसकी छाप, उसका इम्प्रेशन उसकी जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत रहता है. उस दिन से आप उसे एक वायलेंट सिटीजन बनाने के उसमें तैयार करने लग जाते हैं, ट्रेन करने लग जाते हैं, नोविंगली और अननोविंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. देन अगेन protection from hardship. Suppose a child went through a sexual harassment, तो उससे उस हार्डशिप का जो टाइम है उसको कैसे डील करना है, इन सब के बारे में भी इन चीज़ों को जानना है कि आपको कैसे उसके लिए बहुत कंपैशनेट होना है, कैसे सॉफ्ट होना है.